Yes, Bismillahirrahmanirrahim. sir. Software testing. Right, bilkul. So turn off your mics now. Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start with the basic of software testing. As I told you in the class, normally we test our software for the bugs, for the errors. माइक आपका कभी ऑफ हो रहा है कभी ऑन, बेटा इसको ऑफ कर दीजिए ताकि मुझे आसानी हो। मेरे पास नॉइज़ बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। हर बच्चा चेक कर ले उसका माइक गलती से ऑन तो नहीं है। So now what is software testing? As I told you, software testing is a method to what? Number one, check whether the actual software product matches expected requirements. That means if my user has said, I want a software that will do 1, 2 and 3. So what we will have to test? We will have to check my product, my software that I have developed, is it doing that 1 and 2 and 3? If it is doing that, then that means that in fact there is no issue in my software. But if there is any issue, then I will try to uh, solve that issue. So now check whether the actual software product matches expected requirements. Whatever was expected, is it doing that? So now check. Purpose क्या है? To identify gaps or missing requirements in contrast to actual requirements. कि जो उसने मुझे कही थी actual थी, तो maybe there are some missing requirements, so I should check and apply those. And the other that I told you, that is to ensure that software product is defect or error free, bug free है. So हम क्या करते हैं? We identify bugs and errors. So now, so far in your classes, you are already testing. Although you are in third semester, but whenever you code, you compile and test. You get few warnings and few errors, and you try to remove those errors. And by the end of that development, you try to check your assignment that it is doing everything. It is doing everything that teacher has given you the requirements. So you will check those requirements and your software, and here you will check your code for the bugs. So now let's see what is testing. Now we know what is testing, and now we will check why it is important. In fact, if my software perform any error, and my software if it is critical, then in that case people are going to sue me, वो मुझ पे दावा कर देंगे कोर्ट में। चेक कीजिए। टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सॉफ्टवेयर बग्स कुड बी एक्सपेंसिव, यानी तुम्हें महंगे भी पड़ सकते हैं और कभी कभी डेंजरस, जहाँ पे इंसान भी फौत हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर बग्स कैन पोटेंशियली कॉज मॉनिटरी पैसों वाला एंड ह्यूमन लॉस, एंड हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। तो यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल सिर्फ डाली है फिलहाल बताने के लिए। सो नाउ चेक। निसान कार्स रिकॉल्ड ओवर 1 मिलियन कार्स, 10 लाख कारें फ्रॉम द मार्केट। क्यों भाई ख़त्म करनी पड़ी? क्यों? ड्यू टू सॉफ्टवेयर फेलियर इन द एयर बैग सेंसरी डिटेक्टर्स। उन्होंने उनको वापस किया, उन्होंने कहा भाई ये ठीक करना पड़ेगा क्योंकि एयर बैग को सेंस करने वाला जो था उसके अंदर एरर आ रहा था, और क्योंकि वो आया तो उनको दे हैव टू रिकॉल, दे हैव टू कॉल बैक देयर 1 मिलियन कार्स। हमारी ज़बान में 10 लाख हैं, ये 1 लाख नहीं है। देयर हैज़ बिन रिपोर्टेड 2 एक्सीडेंट्स ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर फेलियर। सॉफ्टवेयर ने मिस उसको जज किया और वो एक्सीडेंट्स हुए, और वो उसकी वजह से जो है उन्हें 1 लाख 10 लाख गाड़ियाँ वापस मंगवानी पड़ी। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। नंबर टू, स्टारबक्स, ये हमारा उधर का, हमारे मालिकों का जो है ना, अमेरिका का एक मशहूर ब्रांड है कॉफ़ी का। सो दे वर फोर्स टू क्लोज अबाउट 60% ऑफ स्टोर। एक वक्त पे उन्हें अपने 60% स्टोर्स बंद करने पड़े यूएस और कनाडा में, ड्यू टू सॉफ्टवेयर फेल इन इट्स पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। जो वो कैश लेकर दे गिव यू अ रिसिट, दे एंटर योर ऑर्डर। इनफैक्ट वो छोटी सी मशीन ने काम करना छोड़ा, उसमें एरर आने शुरू हुए, तो उनके 60%, ये कहना आसान है, ये हज़ारों की तादाद में है, तो आप सोचना शुरू कीजिए कि कितने सेंटर्स ऑफ हुए होंगे एट वन पॉइंट। और एक मौके पर द स्टोर, किस उस स्टोर, एक मौके पर स्टोर ने क्या किया, उसने सर्व की कॉफ़ी फॉर फ्री। क्यों मुफ्त देनी पड़ गई? एज दे वर अनएबल टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन। उनका वो चल ही नहीं रहा था सॉफ्टवेयर जिसमें वो एंट्री करते हैं, सो दे हैड टू ऑफर फ्री कॉफ़ी। स्टारबक्स का बता रहे हैं, देखो निसान बड़ी कंपनी, स्टारबक्स बहुत बड़ी। और आखिरी देखो जो कि एक बड़ा डेंजरस उसको दिखाता है एरर को,
China Airlines Airbus A300 क्रैश ड्यू टू अ सॉफ्टवेयर बग। उसका जो एरोप्लेन का जो सॉफ्टवेयर था उसमें कोई बग था ऑन अप्रैल 26 1994। बेशुमार होते हैं लेकिन ये एक उसने मिसाल दी हुई है। और इसमें इसमें किलिंग्स कितनी थी देखो ज़रा, ये देखो 264 इनोसेंट लाइव्स, यानी 250 से ज़्यादा लोग फौत हो गए थे एक सॉफ्टवेयर एरर की वजह। बेटे आप माइक बंद करें, आप शायद जब आप माइक खोल रहे हैं बहुत नॉइज़ है। अगर किसी को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यार इसको बताओ कि माइक ऑफ करे भाई। सो नाउ वी हैव वन अबाउट द कार सॉफ्टवेयर। आप इसको ऑफ करेंगे तो मैं बोलूँगा कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, आप लोगों के अभी भी खुला हुआ है एक माइक। सो नाउ वन रिलेटेड टू द कार्स, अदर रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे काउंटर्स के ऊपर सिस्टम चल रहे होते हैं उनकी बात हो रही है। और थर्ड एक जहाज़ के अंदर, और मैंने आपको एक ये बताया था कि एयर स्पेस जो हमारे पास ये एयर शिप्स होती हैं उसके अंदर भी इशू था और वो लैंड करने से पहले वो तबाह हो गई थी। तो डेफिनेटली देयर आर errors that can be issue for us. So now check how we test, method of testing. There are basically main two methods, books में यूं ही लिखते हैं लेकिन तीन होते हैं। So now check black box testing. What happens? In fact, I do not open the code. I simply run the software and I give it the values, and I get the output and I check if the output is correct. For example, my user asked me कि आप 8 character का password लेंगे। So what I try to give it the normal user login and normal password and it accepts fine. Then I will try the wrong password, for example more less than 8 characters, and then I will check and it will give me some error or something or not. If it accepts, so fail, because my user said password must be more than 8 characters. So when I was registering, when I was signing up, if I gave it 4, I will try to give it 4 characters. If it accepts, so it is gone. So in this way we do not look at the code, we just run the software, we give it the inputs and we check the output. Is it according to the input or not? So now check black box testing. ये black box है, we cannot see inside, we cannot look at the code, is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is not known to the tester. I do not know what algorithm they have used, what kind of variables they have used, how they are passing the parameters. So tester gives the input and checks if the out। सारों को नहीं आ रही? बेटा अभी हाँ मैं ओके बेटा, अपना नेटवर्क अब आप चेक कीजिए मेरा बेटा, माइक ऑफ कीजिए। So tester gives the input and checks if the output is correct and as per requirement or not. So what we are doing, we are not looking at the code, we just run the software, we give it the values, I give the for example मैं भी यहाँ मिसाल देता हूँ, I am trying to buy some shirt, and when it asks for the quantity, one shirt, two shirts, three shirts, so if I am a tester, I'll go with -1 shirt, I will go with 0 shirt, because 0 shirt is no order, -1 is no order. So I will try to give it the input and check how it responds. Will it accept? If it accepts -1, then error, then there is some issue. So in this way we do not open the code, we look at the software and then we just give it the values and check the output. Next one, contrast to the black box, is the white box. So now check, it is known as white box testing, it is also known as glass box testing, yani we can see through. So that means when the software's internal infrastructure, that means code and design, are visible to the developer or tester, that refers to white box testing. So we open the code, we look at the code, and then we try to find out the error. So now in a white box testing approach,
tester tests several aspects of the software like decision branches. आपने if then else लगाए हुए हैं, loops, do until, do while, फिर आपने statements पास की हुई हैं. तो they can test everything by looking at the code. Now if I ask you one thing, how do you test? Black box or white box? black box. Sir, both. Depend Both, on the both. situation. Excellent. Very good. Sir, both. How both? You just make a small assignment. मैं अभी बहुत बड़े project की बात नहीं कर रहा, considering you as the third semesterians. So I'm just telling you, you make a small class project of OOP. बेटा आपके माइक्स ऑफ नहीं हो रहे हैं, मेरे कान में शोर आ रहा है. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टर्न ऑफ द माइक्स. अपने माइक को एक दफ़ा देख लें. क्या पता आप समझ रहे हो कि इट इज़ ऑफ बट इट इज़ नॉट ऑफ. मुझे शोर आ रहा है इधर. थैंक यू. सो नाउ चेक what you do. You make an assignment. छोटी सी assignment है सर, 30 lines है, only 30 lines, but you just code and you compile and you run. Now you have a software. So what you do when you compile it, it gives you error when you run it. So you open the code and you check the code. No, so it is now white box testing. Once you just make it bugs free, now you run it, now it is running. You do not open the code. You just look at the software, you give it the value, and you get the answer and you test whether the answer is according to the input or not. So in fact you are doing a different kind of testing, that is the mixture of white box and black box, and that is known as gray box testing. That is known as gray box testing. Khalid Hassan, kindly turn off your. Khalid, can you turn off your right? Jazakallah, because I'm really in trouble. So that is why I came here to see कि किस किस का mic चल रहा है. So now, so I said that in fact you people are using the black box and white box. You are using both approaches, and in fact when we combine the color white on the black, we get the gray, so we call it gray box testing. So now check, when testers use both black box as well as white box testing methods, then it is known as gray box testing. Are you clear about it or not? Yes, It sir. was so clear. Right. So now check. अब हमें समझ में आएगा when we studied the V model, then at that time we said that V model is more towards the testing. Turn off the mics. More towards the testing. So now check what happened. There is a large number of testing types, but we will learn few that are related to our course. So now check. Number one is code generation. When we are coding, in fact, we check every line of code. But once our component, our unit, our that functionality is complete, we perform the unit testing. And now check, here we have unit testing. This software testing basic approach is to followed by the programmer to test the unit of the program, a piece of the program. You know the component testing, unit testing, these all are the same. Component testing, module testing, unit testing, these three names are same for the unit testing. So in fact you are trying to identify the bugs in one unit, right? In a unit, it helps developers to know whether the individual unit, that piece of program of the code is working properly or not. So we if I have so if we have three different modules in my software, then I will check the first module separately, it is working properly. Then I will check the second one, it is also working properly. Then the third one, it is also working properly. Then I will try to connect them, integrate them. मैं उन्हें जोड़ूंगा. So when I will integrate, I have another type, that is integration testing. It focuses on the construction and design of the software. अब ज़रा वापस चल के देखते हैं और आपको दिखा देते हैं. ये देखिए,
For the unit testing, I just need the code and component design. But for the integration testing, I need the architectural design. Which component is connected to which other component and how each component is working. So now for the integration testing, I need the architectural design as well. So now check. It focuses on the construction and design of the software. You need to see that the integrated units जिनको मिला दिया है, those have been combined, those have been integrated, are working without errors or not. So when I connect 1 and 2, module 1, module 2, unit 1, unit 2, and I execute some command and I try to get the result from both of them, that A passes some value or parameters to B, or B passes some output or parameters to A, then we check that are they both working properly. That is integration testing. When it is working good, then I will try to integrate the third module, third component, and then I will check. So now it is integration. Once we are done with we have integrated all the units, we go towards the system testing. For the system, I need the requirement modeling and the architectural design. So now check. In this method, योर सॉफ्टवेयर इज कंपाइल्ड एज अ होल. अब आपने पूरा सॉफ्टवेयर को कंपाइल किया, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, एंड देन टेस्टेड एज अ होल सिस्टम इज बीइंग टेस्टेड. दिस टेस्टिंग स्ट्रेटजी चेक्स द फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी अमंगस्ट अदर. यानी यह मालूम करेगी कि दिस सॉफ्टवेयर इज रनिंग properly or not on that environment. For example, Windows 7 पे चला कर देखा, then we tried it on Windows 10 or not. तो हम इसको देख रहे हैं पोर्टेबल है कि ये एक OS पे भी चल रही है, दूसरे पे भी. Is it working on one machine and the other? So we are testing that system. Whole software is being tested for the errors, number one, or number two, will it work on different environments that we have written in our SRS. And the last one is acceptance testing. And I told you the software user or the person who is asking us to develop that software, he will either accept or reject the software. He will accept if you fulfill all the requirements mentioned in SRS. We just talked about it. So now check if my software fulfills all the requirements, then he will check. I will ask him, either you take the copy of the software and test it at your place, or you come to our office. We will provide you a similar environment like your office or your shop, and you can work over here. So now check. The purpose of acceptance testing is purely to ensure that the end user जिसने इस्तेमाल करना है can achieve the goals set in the business requirement. For example, if Saramad has to enter your courses, your marks, then I will ask him, please test the code, please test the software. So if he says yes, it is working properly, then it will be acceptance testing and it will be accepted by the user. पहले बताओ यहाँ तक कुछ क्लियर है? Yes, sir. सब क्लियर है सर. चलो अब अगर ये सब क्लियर, दूसरा वाला तो खतरनाक है बेटा, कोशिश करना पढ़ लेना. अब ये देख लो, ये एक रेड सा मैंने, बल्कि पिंक नज़र आ रहा है मुझे, क्यों, हाँ कुछ ऐसे ही है. ये मैंने इसमें लिखा है व्हाट आर अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग. जब आप ट्यूसडे को आएंगे तो ज़रा ये पढ़ कर आइएगा. ये वैसे मैंने क्लास में आई हैव डिस्कस कि कंपनीज प्रोवाइड द बीटा वर्जन्स टू देयर फोकस फैमिली, देयर फोकस यूज़र्स, लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप इसको पढ़ कर आएँ, सो देन इट विल बी डन. मैं अभी सेकंड शुरू नहीं, ऑफ करो बेटा माइक, मैं अभी सेकंड शुरू नहीं कर रहा, बस अब आप जाके अपनी वो असाइनमेंट बनाइए, उसे ख़त्म करें. यहाँ पे मैंने इसी वाली को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, देख रहे हो. तो जो मैंने नेक्स्ट सोचा है उसको फ़िलहाल बाद में करते हैं, कॉज ठीक है, ठीक हो गया. क्लास ठीक है यहाँ तक? यस सर. चलो. यस सर. और जो हजरत अभी आज आ रहे हैं, इनको बता देना कि भाईजान अब आप नहीं आ रहे.